So today is Tuesday and we are going to have grammar. Last time we have seen our a indefinite article, correct? A indefinite article we have seen last time. Today we are going to see an indefinite article. Okay? And definite article we are going to see today in our English lessons of grammar. Today we have grammar. So let's get started with an identified indefinite article. How many of you have practiced at home that a definite article? Yes, this one. Hello? No, sir. No? No. Why? What is the page number, sir? 54. Please keep on practicing at home. If you don't practice at home, then may God help you. Huh? Remember this. If you are not practicing at home, then it will be a great loss for you. So this is what exactly I want from your side is what practice. Now today we are going to start two rules together. That's what an indefinite article and the definite article. We are going to see today when to use the, how to use the, and when to use an. How to use and where to use and. Each and everything we are going to see today. All right, so without wasting time, let's start it because I don't believe that other students would be coming, and if they would be coming, then we'll see. All right, so here we go with an indefinite article. Now we have seen before when to use a, correct? We know well that when to use a, but now today we are going to use an, the usages of an and how to use when to use an correctly. We're going to see over here. All right, today is 27th October 2020. All right, now first of all would like to know that when do we use a? Who can tell me? So For when single, use for for singular single thing. singular noun and beginning with consonants. consonants only? Beginning with consonants only. No. So कोई भी single चीज के लिए आकार. I know well that we are using a or when something is only one. But when do we use a? Before singular countable noun beginning with Consonants consonants, and consonant sounds. sounds. Exactly right now. We are using a for singular countable noun beginning with consonant sounds. Beginning with consonant sound. We are using beginning with But consonant sound. sir, Getting it? sir, but this is rule number 2, no? And in rule number 1, there is consonants beginning with a singular noun Correct. with consonants, and rule number 2 Yeah. with consonant sounds. Sound correct. No, actually the rule is the same, but only just to teach you, I just taught there that what our teacher taught us in school. She said that we are using a for singular countable noun beginning with only consonant, but it was not the correct definition. The real definition is what we are going to use a for singular countable noun beginning with consonant sounds. And Okay. sir, Now, partitive nouns also, no? yeah, for partitive noun also we can use it. We can use it for partitive noun. We can use it when we are saying something is less. जब कोई चीज थोड़ी है उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं a. Correct? Yes. So this is what the major rule of a, that we are using a for singular countable noun beginning with consonant sounds. Correct? So this is the main rule. Now an, we are going to see today an, when to use an. Yes, when do we use an? Who can tell me? With vowels, sir. Vowels. Correct. Vowels. And also means Vowel one. sound, sir. Correct, exactly. Now let me tell you one more thing. What our teacher taught us in our school, we are using a for singular countable noun beginning with consonant, and we are using an for singular countable noun beginning with vowels. Correct? An means one, a means what? Also one. If you see here, teacher taught us. What I'm saying here, please listen to me carefully. Listen to me carefully. Mr. Usama, can you please mute yourself? So we are using an when something is only one. Correct? And our teacher taught us that we are using an before singular countable noun beginning with vowels. Correct? It is the half definition. If teacher is saying that we are using an before singular countable noun beginning with vowels, for example, an apple, an ice cream, next, an owl, next, an Eggs. umbrella. Yes, Eggs.
an egg. Very good. So we are using here an for singular countable noun beginning with vowels, correct? An apple, an ice cream, an owl, an umbrella, correct? An orange, an elephant, an island, an egg, etc. So we are using an for singular countable noun beginning with vowels. But this definition is half. Why half? I'll show you how now today. Why half? Let's have a look here. Now, if you see here, rule number 1 is saying over there what our teacher taught us, and she taught us half. Why? Let's see here. An indefinite article is saying we use an when something is singular and when something is only one, beginning with a vowel. For example, an apple, an egg, an ice cream, an owl, an island, an exit, an elephant, an escalator, an office, an umbrella, etc. Correct? How many vowels do we have in English? 5. 5. We have 5 vowels in English, correct? A, E, I, O, U. And whenever a word is starting with a vowel, we are going to put there an. Correct? This is the half definition, first of all. This is what exactly half definition. I'll be telling you today the full definition of it. So the first definition what teachers has given, that's what we are using and before singular countable noun beginning with vowels. For example, an apple, an ice cream, an elephant, an egg, an escalator, an owl, an island, an office, an exit, an umbrella, etc. Now, do you have any problems with anyone? Is there anyone who has any problems with it? No, No, sir. sir. All right. Let's go for the next one, and that's rule number 2. Now, rule number 2 means what? Actually, this is the main rule. This is the main rule, and the rule is saying we use an before some words beginning with silent consonants as the next letter is a vowel. We can use an before the words which are starting with a silent consonants and the next letter is a vowel. For example, an hour, an honor, an hourglass, Honest. an Honest. honest person, etc. Now here the rule is saying we can use an before consonants, but those consonants which are silent. But those consonants which are absolutely silent. We can use an before consonants, but those consonants which are absolutely silent. For example, an hour, an honest person, an hourglass, an honor. If you see in these examples, H is silent. Do we pronounce that an hour? No, we say an hour. H is silent. H is completely silent, and the next letter is a vowel. 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 So here, if you see, and we are using there before some words which are starting with a silent consonant, and the next letter is a vowel. Getting it? An hour, because the sound is coming. Sound is coming. And word, 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 word. And what is the sound? The sound is what? Sound is there. And what sound is? Vowel sound. Yes or no? Yes, sir. What Yes, sir. sound is? Vowel Vowel. sound. When sound is coming, that vowel sound we are going to put there. N means ultimately our rule is running on the sound. On the sound. Same case, an hour, an honor, an honest person, an hourglass, an honest person, an honor, an hour, etc. Wait. Hello? Hello? हाँ हाँ हाँ
Sorry. So here the sound is coming an hour, an hourglass, an hour, an hourglass. Okay. Same case. If you see here in these one, the sound is coming an honor, 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 an honest person, an honest person, an honor, an honest person. The sound is coming o, o, o. And what is o? O is vowel. And for vowels, we are going to use there an. For vowels, we are going to use there an. A, E, I, O, U. We have 5 vowels in English, and for those vowels, we are going to use there an. Yes or no? So an apple, an ice cream, an owl, an umbrella, an island, etc. If you see here an hour, the sound is coming an hour, an hour, an honor, an honor. So here the literally the sound is coming what? Vowel sound. And for vowel sounds, we are going to use there an. Any doubts to anyone? Any doubts? Hello? No, sir. No, sir. Same case, would like to tell you. Now let's compare it. Now I'm going to compare it well. Okay, for example, we are going to use the for the words which are starting with H. For example, a home. Next, a horse. Next, a hive, a house, etc. If you see here, I'm putting there A before the words which are starting with H, and the next letter is a vowel. The next letter is a vowel. Here, a word is starting with H and the next letter is a vowel, and I'm putting there N. Same case here. The word is starting with H and the next letter is a vowel, but I'm putting there A. Why? Sir, Sound is because consonant, sir. sound is not. Consonant sound. Exactly, because the sound is consonant, it is not a vowel sound. Because the sound is what? Consonant, it is not a vowel sound. We are saying that a home, a house, a horse, a hive, a house, a horse, a home, a house, a hive, etc. If you see here, the sound is coming h. The sound is coming h, 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 and her sound is Consonant. completely consonant sound. That's what H is not silent in this scenario. H is not silent in this scenario, and here H is silent. Here H is silent. Are you getting the points? Here H is silent and here H is not silent. That's why the matter is getting there. So now, guys, would like to tell you one more thing is what we got to know, that whenever singular countable noun is coming with a consonant sound, we are going to put there A, and whenever a singular countable noun is starting with a vowel sounds, we are going to put there N. Now I'm going to show you here some great rules. Now, what you have learned in your school is that an apple, an ice cream, an owl, an umbrella, an egg, etc. You have learned all these things in your school, but today I'm going to show you something new, and that's what let's answer me. If I ask you one question, if I ask you a question, and the question is what? There is dash, there is a, no. There is dash H in the word hat. There is dash H in the word hat. Please fill the gap with suitable article A or N. A or N के साथ में उसको आपको fill करना है. What would be coming there? A or N? There is A. H or there is A. A, sir. This is what A, this sir. great mistake you are commenting here. This is what called Sir. grammar. Basic grammar is what? N. Here is what N. Why? Answer. Why? Sentence पूरा करने के लिए sir. No, my Because- dear, not That starts from A. exactly. Now here, this is what I told you here already. See, this is what the same mistake you're committing over here. We are saying an hour, an hour, an hour. The sound was coming A, hour, hour. If you see in this scenario, the sound is coming vowel sound, and I have given already the definition to you. And that whenever we have the word which is starting with a vowel sounds, we are going to put that N, not A. Whenever we have a word which is starting with a consonant sounds, we are going to use their A.
And whenever there will be a vowel sounds, we are going to put their N. Now, if you see here, there is an H. There is an H. An H, not a H. Why? Because there is an H in the word hat. एक word hat के अंदर कितने H हैं? एक H हैं. N मतलब one. Correct? An H. 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 उसको मैं ह बोल रहा हूँ क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ उसको? There is an H. यहाँ पर एक H है. यहाँ पर एक H है in the word hat. एक H है H. So H का sound कैसा आ रहा है वहाँ पर? H, 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 and that's what? A vowel sound है वहाँ पर. और वो vowel sounds के लिए मैं क्या लगाऊंगा वहाँ पर? N. So now my guys, if you see here, we are going to use N for singular countable noun beginning with a vowel sound. For example, if you see here, let me give you some more example. X-ray. What shall we put here? An X-ray or O X-ray? An X-rays. An X-ray. Any Exactly. We are going to use here an X-ray. Same case, an RTO slip. Okay, an RTO slip. ऐसे मैंने खाली example दिया हूँ. Next, an SMS. Next, an HOD of my college. Next, an LCD glass. Next, an MP, an MLA, an MP, an MLA, etc. If you see in these examples, our teacher taught us in school that whenever we are starting, we have a word which is starting with a consonants. We are going to put their A. X is a consonant, but we are using their N. S is a consonant, but we are using their N. L is a consonant, but we are using their N. R is a consonant, but still we are using their N. H is a consonant, but still we are using their N. M is a consonant and we are using their N. How and why? Because of the sound. Sound. Because of the sound. Now listen to me carefully, my dear. If you see here, an X-ray. Why X-ray? X-ray के लिए M क्यों लगाया वहाँ पर? Because if you see the sound is coming there, X-ray. An X-ray. किसका sound आ रहा है उधर? किसका sound आ रहा है? Vowels. T, sir. And vowel, for vowel sound we are going to use their N. Yes or no? Yes, Yes. sir. Ultimately, our rule will be running on the sound, not on the written English. So whenever there is a vowel sound, we are going to use their N. Vowel sound matter करता है बहुत ज़्यादा. Whenever there is a vowel sound, we are going to use their N. Whenever there is a consonant sound, we are going to use their A. These are the words which are starting with consonants, and we are going to use their N, not A. सर, Same SMS case, के लिए कैसा आएगा सर? आएगा ना SMS आएगा. के लिए आ रहा हूँ. नीचे आ रहा हूँ. NRTO slip. NRTO slip. RTO slip. The sound is coming what? मैं उसको RTO बोल रहा हूँ क्या? Am I saying RTO? Yes. No, sir. No, sir. अरे गरीब लोग बोलो जरा. आप लोग चुप बैठे एकदम. No, sir. Good. So an RTO, RTO. The sound is what? And sound is what? Vowel sounds. And for we are going to use there. See, I have got an RTO slip. मेरे पास में RTO का slip है. Next, I sent you an SMS. Why an SMS? An SMS क्यों आ रहा है? Because the sound is there. N S M S. Am I saying there's summer sir? क्या मैं उसको summer sir बोल रहा हूँ? सर बट सर, मैं इंग्लिश बोल में रहा तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना सर, नहीं पढ़ेंगे ना सर, सर मराठी में पढ़ते हैं. Exactly, my dear. तो उसको पढ़ कैसे रहे हम लोग? S M Yes. S M S. Here the sound is starting with A. And what is A? What is A? Vowels. A is a vowel. A is a vowel, and for vowels we are going to use there N. Aya? N. Aya? Exactly. Yes, sir. Same. He is an HOD of my college. He is an
HOD of my college. If you see here, the same scenario will be coming. He is an HOD of my college. So H, do we say OD? No, HOD. So the sound is coming A. And what is A sound? Vowel sound. For vowel sound, we're going to use the N. See, this is what I'm going to tell you. When I went to last, I think 4-5 years ago, I went to India's a very reputed spoken English classes. I won't name the classes. Why? Because किसी का कचरा नहीं करना चाहिए. So I went to that classes, and that classes instructor, he was praising the class a lot to me. I asked him only one question, sir. What shall we put before university? University के लिए क्या लगाना चाहिए sir मैंने? A or an? He answered me, you should put there an. Simple. University is starting with a word U. And he was absolutely Wrong. 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 Why? Because the sound is coming Consonant. university, and that's what? Consonant sound. University. A university, not an university. If you're going to put there an university, then your children will be laughing at you. See, मेरे अब्बा को कुछ नहीं आता, फकीर अब्बा है मेरे. Why? Because of such mistake. All right, my dear friends. So this is what a university. The word is starting with U, but the sound is consonant. And for consonant sounds, we're going to use the N. Here, the word is starting with a vowel. The word is starting with a vowel. The word is starting with a vowel. Correct? And we are putting their N. And here, the words are starting with consonant, but still we are putting their N. Why? Because of their sound. Same case. I have an LCD. I have an L. Do we say LCD? No, we say LCD. I have an LCD. I have an LCD. I have an LCD with me. So L, the sound is coming what? A, L. And what L sound is what? Vowel sound. And for vowel sound, we are going to use there. We are going to use it. Not same case. He is an MP. She is an MLA. So an MLA. The sound is coming A, M. Vowel sound. And for vowel sounds, we are going to use their and, not a. Is that clear? Yes, sir. Yes, Sir, sir. if we are using full form, then it should be A, na sir? Means he is a head of department. Correct. Now, if you see here, see, he is an HOD. So I'm writing here both of them. He is an HOD of our college. So he is, see here, मैंने वहाँ पे कुछ लगाया नहीं है. He is an HOD of our college. Next one, he is a, head of the department of our college. Getting it? If you see here, he is an HOD, and HOD. H sound is coming H, A, vowel sound. So an HOD. And he is a head of the department. We are using here a. Why? Because the sound is not coming vowel. It is coming completely consonant sound. A head of the department. A head of the department. Head of the department. Getting it? Same case here. An hourglass. A sound is coming. Hourglass. And here a hive, a home, a horse. H sound is coming. And H sound is consonant sound. For consonant sounds, we're going to use the A. For all sounds, we're going to use the N. Any doubts to anyone? Hello? No, sir. No, sir. Exactly. How many of you are feeling like, अरे हाँ यार, ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था. Sir, Me, I sir. I Me, also, sir. What exactly? Me, What I'm sir. also, sir. is what exactly what our teacher taught us, and that exactly what rule was. Shocked, sir, today. So this is, my dear friends, this is called basic grammar. ये सबसे main आप लोगों को ABC अगर अपना अच्छा नहीं रहा तो अपने ऐसा मिस्टेक हो सकता है. आज जाके सामने वाले को बोलो क्या आएगा इधर, उसको आके पूछो अपने कॉन्वेंट स्कूल के दोस्त को, इधर दोस्त
माझं नाव प्रदीप एक्सरे साठी काय लावणार ते बोलेगा बट वो लग रहा है यार प्रदीप कल तक शेमड़ा था इतना अच्छा होगा कैसे यार क्या मालूम यार कहाँ से भी पड़ गया यार वो गेटिंग इट भाग जाएगा प्रदीप के पास से why because he got to know something that Pradeep has. So here my dear friends, if you see here we use and before singular countable noun beginning with a silent consonant and the next letter is a vowel. An hour, an honor, an HOD, an MP, an honest person, an hourglass. H is silent here. Next one, a hive, a horse, a home, a honeycomb. H is not silent here. Her sound is coming there. Same case, now we are going to use their N for jobs as well. As we have seen yesterday that we are going to use their, we are going to use their A for jobs, correct? For example, a painter, a lawyer, correct? A painter, a lawyer, a realtor, a stationer, a palmist, a barrister, correct? A doctor. Same case we can use N for jobs. For example, an engineer, he is an engineer, she is an architect, he is an accountant, she is an English teacher, he is an entrepreneur, she is an ophthalmologist. So we can use their N for jobs as well. All right, any doubts to anyone? No, sir. So we can use N for jobs. For example, an architect, next an astrologer, Engineer. correct, an engineer, an engineer, next an accountant, etc. Okay, so we are going to use here and for vowels as well, for vowels and for jobs. Any doubts to anyone? Simple rule was there for an and for a as well. Now my question is there to all of you. अब मेरा एक question है आप लोगों से. Listen to me carefully, हाँ? Listen to me carefully. ध्यान देना है और जो भी बंदा करेक्ट आंसर देगा उन लोगों को गिफ्ट मिलेगा. अगर आप सब लोगों ने भी अगर करेक्ट आंसर दिया आपको सब गिफ्ट मिलेगा. All right? Now my question is there. Listen to me carefully. We have two people. मेरे पास में दो लोग हैं. Okay? Mr. A and Mr. B. Mr. A and Mr. B. Mr. A and Mr. B. Correct? Mr. A and Mr. B. Mr. A and Mr. B. दो लोग हैं मेरे पास में. Mr. A bought a black and white shirt. And Mr. B bought a black and white shirt. I'm repeating again. Mr. A bought a black and white shirt. And Mr. B bought a black and white shirt. A ने कितने खरीदा है, B ने कितने खरीदा है? Please tell me. Mr. A is there and Mr. B is there. अब ये मत बोलना वापस रिपीट करो क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा. IELTS के एग्जाम के अंदर खाली एक बार सुनाते हैं, उसके बाद में रिपीट नहीं करते वो लोग. एक बार वन टाइम सुना दे छोड़ दिया. ओ परत घ्या ना मला, परत मागा ना मला, ओला घर पे जाओ. हो 14,000 रुपये भरलेत मी एक्झामचे, तर पुढे आता परत भरायचं आणि परत यायचं. वाचन काढायला लात घाल, रुकाते भी नहीं है. वाई वन टाइम कान बहुत तेज चाहिए अपना वहां पर, प्रॉब्लम नहीं होना. यस, I'm repeating once again. Mr. A bought a black and white shirt and Mr. B bought a black and a white shirt. A ने कितने खरीदा है, B ने? A ने 2 सर और B ने 1. दोन्हींनी पण एक एक. नो सर, A ने 2 और B ने 1. ओके, चलो अभी चैताली मैडम आपकी बारी. सबको अपना अधिकार मिलेगा अपने बोलने का, सब बोल सकते हैं अपने यहाँ पर, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सबको मौका मिलेगा, सब टेंशन लेने का नहीं, सबको देंगे हम लोग यहाँ पे वोटिंग करने के लिए. यस, अभी हमारे यहाँ पर चैताली मैडम ने क्या बोली है? Yes sir. दोनों ही पन. A1 and B1. ओके, 1-1. सर यस, बी ने ब्लैक और क्या एंड लगाया आपने?
मालूम नहीं मेरे को भी, चलो रतलू 4-5 बार रिपीट करा मैंने, चलो नेक्स्ट। A is 2 and B is 1. Sir, A2 and B1. A2 and B1। चलो नेक्स्ट, और कौन बोलेगा? प्रदीप। 2 1. ओके 2 1। चलो शिवदास। Sir, 2 2. 2 2। चलो शिवदास। Sir, one of them is 2 and one of them is 1. I haven't heard, sir, what the. हो, मला माहितच नाही कोणी काय घेतलंय। कन्फ्यूज पार्टी। कार्तिक। Confused, sir, one of them is 2 2. 1. Sir. ओके 2 1। उमेर। A have 2 and B have 1, sir. 2 and 1। चलो और कौन बचा है? गुड्डू। Anyone else? कार्तिक। डन हुआ सबका? चलो मैंने क्या बोला था, ध्यान देना है अभी। इसके लिए बोलते हैं कान बहुत पक्के चाहिए हम लोगों को, कहीं पर भी, खाली IELTS के एग्जाम में नहीं, आपकी जिंदगी में भी, आपके लाइफ में भी, कभी भी याद रखो कान बहुत पक्के चाहिए आप लोग, कान तेज चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है? What did I say? A मैंने ने क्या बोला? black and white, sir. Mr. A bought a black and white and Mr. B bought a black and a white shirt। आंसर है उसका 1 B2. and 2। अब इसके अंदर आंसर किसने दिया है ऐसा? आप में से एक ने भी नहीं दिया, सबका रॉन्ग हुआ है। I said Mr. A bought a black and white shirt and Mr. B bought a black and a white shirt। ध्यान देना है अभी, ध्यान देना है सिर्फ, आंसर उसका यहाँ पर था ऑलरेडी। If you bought a black and white shirt means you bought only one shirt। मैंने क्या बोला? Mr. A bought a black and white shirt। Black and white shirt। A means what? 4, बराबर? हेलो। Yes, sir. No, sir. आओ, अ का मतलब एक होता है, ध्यान दीजिए। मिस्टर ए बॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, मतलब यानी मिस्टर ए ने एक ऐसी शर्ट खरीदा जिसके अंदर चित्री कलर थे 2। अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट मींस 1 शर्ट। एंड बी बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट। 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 2 shirts, 1 and 2, 1 and 2। एक ब्लैक एंड एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट शर्ट। समझा? Yes, sir. समझा? So the answer was there 1 Yes, 2। sir. एक बंदे का भी आंसर सही नहीं है। 1 2 2 1 कर दिया आप लोगों ने उसको। I said A bought a black and white shirt and B bought a black and a white shirt। तो उसका आंसर आना चाहिए था, A ने एक लिया a black and white shirt 1 shirt, B bought a black and a white shirt 2 shirts लिया उसने, एक black एक white। कहाँ है अपन? किधर है अभी? चलो सेकंड टाइम पूछा सर आपने। वही फिर तो भी मैं बोल रहा हूँ, ये अपने को कान बहुत पक्के चाहिए, क्योंकि इतने बार आपको नहीं बोलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल योर बॉस इज कॉलिंग यू। अब आपका बॉस क्या कर रहा है? आपको फोन कर रहा है, हेलो गुड्डू, या आई एम कमिंग ऑन 20th to Pune, प्लीज पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। ओके थैंक यू, सी यू, चीरियो। इतना बोल के बॉस ने रख डाला फोन। अब गुड्डू बोले हेलो, बॉस को अगर कभी फोन करो तो यार नौकरी से लात डाल के निकल डाले यार वो। बॉस ने क्या बोला है उधर? गुड्डू माय बेबी, माय डार्लिंग, my first and last love, I'll be coming on 20th to Pune, please pick me up from the airport। क्या बोला उसने? I'm coming on 28। तो हमारा गुड्डू जो है वहाँ पे 28 तारीख को जाके बैठ गया, और वहाँ पे बहुत देर बैठा 5-6 घंटा एयरपोर्ट पे। हेलो सर, हेलो, अहो कुठे सर तुम्ही? कोण सर? गुड्डू बोलतोय मी। अरे मी काय इथं आलो नाही, तुमच्यासाठी बसलो इथं। बोला गेट लॉस and never show me your face again। Why sir, why? Hello? Arey you Ratalu, because I said I'm coming on 20th। I didn't say I'm coming on 28th। I'm coming on 20th। 20 तारीख को आ रहा हूँ मैं 8 दिन पहले आ गया घर पे मेरे। ओ सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे यार, ऐसे क्या कर रहे तुम?
So this is what he did not say 28th. उसने 28th नहीं बोला था, उसने बोला था 20th. और अपन आज भी इसको मिस्टेक करते हैं. What is this? कितना ही है? Can you please tell me? 11th. Repeat. 11. 11th. अब यहाँ पे अपने इधर क्या करते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज. ये कितना है? 11. आप लोग डर क्यों ना इतना? कुछ नया बात थोड़ी पूछ रहा हूँ. ऐसे डर चाहिए आप लोग के इंटरव्यूअर के हाथ में कि जब आप पहुंचेंगे उधर तो इंटरव्यूअर बोलना चाहिए मेरा बाप आया आज ही. The moment when you're talking to someone, that someone should collapse. गिर जाना चाहिए. Oh my God. Yes, sir. क्या बोलेगा बोल नहीं सकते हैं. ये मेरा बाप है. अब सामने वाला बोलना चाहिए. ऐसा जबरदस्त आपको कॉन्फिडेंस विथ ग्रेट नॉलेज यू शुड हैव. लोग आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे तो लोग डरना चाहिए. बाप रे क्या बोलेगा अभी ये, बिकॉज ही इज द किंग. बनो वैसा. यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ. क्या आप Yes. नॉर्मल किसी को कर रहे तो लोग 4 लोग डर डचकना चाहिए. ओ माय गॉड, अरे नहीं कुछ तो बोलने वाला है ये कुछ बोलने वाला है. गेटिंग इट? दिस इज व्हाट अपने यहाँ पे इसको बोलते हैं 11. दैट्स नॉट 11, दैट्स व्हाट 11. उसको क्या बोलेंगे? 11. उसको 11 नहीं बोलना. 11. नेक्स्ट वन. व्हाट इज दिस वन? 12. 12th. 12. रिपीट वंस अगेन. 12. 12th. 12. ना. देखो ना. हमारे में बोलने से उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा मुन्ना. उसको गलत बोल रहे अपन. अभी आप लोगों ने क्या बोला? 12th. सुनिए प्लीज मुझे. 12th बोला आप लोगों ने, जो कि गलत है. होना क्या चाहिए? वो कौन बोलेगा मुझे? 12. करेक्ट. वो होना चाहिए 12th. 12th. बचपन से ही मिस्टेक करते आ रहे हैं, हाँ या ना? ये देखो यहाँ पर आप Yes, sir. 12th. अगं आई गेल्या चुल्ल्याच्या भाडात मला गिनती पण येत नाही. 1 2 3 बोललो तिथं. 3 फिरी. सर आपने अभी तक सिखाया नहीं ना सर, ये इसलिए नहीं मालूम. Oh my God. Yes, sir. Right. सर नंबर्स भी सिखा दीजिए अभी. No, don't worry. See, ये सब You अपने are our boss. Yeah, sir. See, ये सब अपने उसके अंदर है. I'll show you each and everything. Don't worry. See these ON numbers. In English, we have 7 types to pronounce zero. एक जीरो को बोलने के इंग्लिश में कितने टाइप है? 7 types we have. चलो आज मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को सामने दिखाई देता हूँ. We can say zero. ये मैंने आप लोगों को अभी बताया पहले. Yes, sir. No sir. बताया Yes, सर. Yes, sir. yes, sir. बताया. बताए sir. अभी देखो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ. We can say 0 to 0. जीरो को हम लोग जीरो बोल सकते हैं इन इंग्लिश इन नंबर्स. कब कब बोल सकते हैं ध्यान दीजिए प्लीज. We can say 0 in temperatures. The temperature is below 0. We can say in mathematics, in science, in technical context and all. We can say 0 in decimal numbers 0.5. Correct? Or science and technology के अंदर हम लोग 0 को not भी बोलते हैं. So 0 को 0 बोलते हैं point number 1. 0 को not भी बोलते हैं point number 2. Okay? In science and technology we can say not. Next one, we can say 0 to duck. 0 को duck भी बोलते हैं. कब बोलते हैं duck? Cricketing. क्रिकेट में. Cricket language. क्रिकेट में सर, जीरो क्रिकेट. पे आउट होता है ना बैट्समैन 0 पे आउट होता है. That's called duck. The batsman went on duck. 0 पे आउट 1 duck. Next we can say nil. nil कब यूज करते हैं? इसमें कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? Sir, मैं accounts. Oh, accounts. तो बोलते हैं ना अकाउंट इज नील. आपका बैलेंस नील हो गया है. 0 को नील बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर. एक 0 को बोलने का चौथा टाइप है नील. नेक्स्ट वन इज नल. How many of you are from engineering? I think Algebra में Correct. use होता है sir. Pardon? Algebric. Algebra. Mathematics में use होता है. अच्छा, ये algebra कहाँ से आया वर्ड मालूम आप लोगों को? सऊदी अरबिया. करेक्ट. कहाँ से आया था वर्ड ये वर्ड बना कहाँ से? algebra. साइंटिस्ट. करेक्ट. एक्चुअली उसका जो था ना, वो जो वर्ड था algebra, वो बना था बल जब्र से. बल जब्र
वहां से बना था। बल जब्र का मतलब होता है डिफिकल्टी, द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसको बोलते हैं अरेबिक में बल जब्र। और वहां से आया था आपका एल जेब्रा। अलजेब्रा आपका वहां से आया अलजेब्रा। आपके टीचर को आगे पूछो जरा, टीचर वो अलजेब्रा तुला काय करायचंय ते कर. Null we are using for engineering and technology. Mathematics. Next one. null हो गया, zero हो गया. Love, ये क्या है? प्यार मोहब्बत. Love we are using in Tennis. correct tennis Sania Mirza. So that's what tennis, in tennis we are going to use a love. Next one. O. When do we use O in phone numbers, in room numbers, etc. Room number, आप लोग को रूम नंबर देखने आता है? होटल में जाते हैं कभी आप लोग? Yes, sir. होटल Not. Yes, sir. आज के आज में जाओ जबरदस्ती में घर सोडून जायचं तर राहायचं एका रात्री. अगाई मी चाललोय का एक्सपीरियंस घ्यायला का? पैसे जाएंगे बट एक्सपीरियंस आएगा. What is this room number? Who can tell me this? 1609. ये रूम कहाँ पे रहेगा? 1609. ये रूम बिल्डिंग में कहाँ पे रहेगा होटल में? Who can tell me this? 16th floor, sir. 9th room. Correct. Exactly. 16th floor. Room number 9. 16th floor. Room number 9. ध्यान देना है, हाँ? ध्यान देना है. If you have 406, room number 406 means what? 4th floor 6. ध्यान में दो, यहाँ पे अच्छी चीज सिखा रहा हूँ कुछ. 4th floor. Correct. Room number. 4th floor. Okay. And room number 6. Room number 6. चलो. Next one. अगर आप लोग का रहा कभी room 315 means what? ये आपके टेप स्ट्रिप्स के अंदर है. room 315 please. 31 floor. No. 3rd Three floor. floor, 3rd third floor. floor 15. Correct. 15 room. 3rd floor. 3rd floor. Room number 15. करेक्ट. रूम नंबर 15. चलो मैं अब आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ. 1902. 19th floor. 19th floor. Correct. Room number Floor. And room number 2. Second. correct. Room number 2. Next one. Yes. ये कौन सा रूम है? कहाँ पे है ये रूम? 16th floor. Room number 303. Wrong. ध्यान दीजिए अभी. 163 floor. अब यहाँ पे 16 फ्लोर, एक 16वें माले पे, एक माले पे 303 फ्लैट हो सकते हैं क्या? 303 रूम हो सकते No, sir. Not No, sir. No, sir. हैं? पूरे एरिया के ऊपर बांधना पड़ेगा उसको बिल्डिंग. इतना बड़ा नहीं हो सकता है फ्लोर. सो थोड़ा सा आप लोग वहाँ ध्यान Starting दीजिए. 301 से हो सकती है सर. अब वहां पर था 163rd फ्लोर बुर्ज Sir, खलीफा. इतनी बड़ी बिल्डिंग सर कहाँ? 163 माले का बिल्डिंग है वो. रूम नंबर 3. समझा? दुबई में रहते अपन. मजाक कर रहा हूँ. बट सी आपको पता होना चाहिए. बिल्डिंग देखा ना आप लोगों ने? आप लोग होटल में जा रहे ना, बिल्डिंग एक बार देख के लेने का. अंदर ही ऐसा जो घुसने का नहीं है. हाँ जानो मला काय करायचं. फिर आप लोग बाथरूम में घुसे. हे वेटर ये रूम का है. तो ऐसे मौकू देखा आपके. अरे पड तिकडे. नंबर माहित नाही त्याला. आपका कचरा हो सकता है उधर. So please get ready for this one. So my dear friends, that today we are going to see here. So 0 O हम लोग कहाँ यूज करते हैं? We are using O in phone numbers. Like for example, my phone number is 29035. My phone number is 8087310392. Okay. Next, in dates also we can say O. In time also we say O. याद है आप लोग को मैंने बताया था why do we say o'clock? O'clock क्यों बोलते हैं हम लोग? We say 3 o'clock. Why? Because 300, तो वहां पे 00 को O बोलते हैं. 3 o'clock बोलते हैं. 3C clock, 3D clock, 3L clock, 3J clock. We don't say. We say 3 o'clock. Why? Because it is what? 300 according to the clock. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 3
o'clock. Getting it? 3 o'clock. All right. सर एक बात पूछनी थी सर ये जो है 3:15 ये सर बताऊंगा मैं आगे चल के हाँ। वो घड़ी टाइम कैसे बोलना है इंग्लिश में. एक टाइम को बोलने के 2 3 3 टाइप्स हैं. दैट आई टीच यू. डोंट वरी. Okay, अभी sir. अपना ग्रामर इसके अंदर वोकैबुलरी में होने वाला है. So for bus numbers and for room numbers also we are using their O. Next one, nil. We use nil in sports. Like for example, the score is 3-0. The score is 4-0. Okay. May I have a number, please? देखो, दीदी आपकी भाभी मेरा नंबर मांग रही है. Next, love. We say love in tennis. Correct. The score is love 30. The score is 3 love, etc. We use duck in cricket. Getting it? So you should know all these things, my dears. So this is what numbers. मैं आपको numbers भी आगे पढ़ाने वाला हूँ. कैसे number को बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं. हमारा numbers भी बहुत बेकार है. 1 2 3 4 5 6 7. तो वो ये लेवल का जब आप लोग बोलेंगे तो सामने वाला बोलेगा oh my god. बहुत बड़ा खर्चा है इसके अंदर. तो ऑयलिंग, ग्रेसिंग, वॉशिंग, बिशिंग पूरा खर्चा है इसके अंदर. So this is what exactly I'm going to show you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया सामने वाली जगह पे गिर जाना चाहिए. अब्बा मेरे को अभी ये चाहिए. मला हाच पाहिजे. कोण आहे हा? कार्तिक. हाच पाहिजे. आणि काय पण होते. अरे तो शेमडा. अरे काय पण राहू दे ते. मला काय करायचंय. प्रदीप. अरे मला काय पण बेवडा आहे का? काय चालतं आपल्याला पण इंग्लिश कशी भारी बोलतो बघा. चला. So here we have finished with our an indefinite article. Any doubts to anyone? No, sir. आज आप लोग ऐसे एकदम चुप बैठे एकदम. अहो तुम्ही सांगा माझ्या पप्पांनी तुम्हाला पैसे दिलेत ना तुम्हीच बोला फक्त मला मी कसं काय बोलणार तुम्हाला. ऐसे मत कीजिए प्लीज. Please keep on answering me, okay? I want the class to be entertaining and learning amazing things, and please keep on asking me questions. Next now, Karthik's a favorite. We are going to have today here the rule. अब the कहाँ पे यूज करना है? कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है the कहाँ पे यूज करना है? Who can tell me now? Faster. Me, sir. Me, sir. Me, sir. Me also. Okay. All right. तो जो लोगों ने अभी me वगैरह नहीं बोला है, I नहीं बोला है, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कहाँ पे यूज कर देता हूँ? Yes. When do we use the? मैंने देखा है सर कंट्री के आगे भी लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इंडिया के आगे नहीं लगता. Very good. यही तो फंडा है. सानिया मैडम. The is used when it is something very definite, like the book. If we are specifying the thing. Very good, girl. Very good. Or okay. Before we go ahead, I just want to motivate you. The rule is nothing. If you come to know 2 to 3 rules of the, you'll come to know each and everything. And do you know how many rules are there for the? Do you know how many rules are there for the? We have more than 50 rules for the. कितने? 50. Correct. 50 से ज़्यादा rules है the के. अब the कहाँ पे use करना है, कैसे use करना है देखेंगे हम लोग आज के एपिसोड में. स्टार प्लस पे आते हैं. चलो ढन. If you see here, we are using here the determiner, and the is an adjective. So the is an definite article. Okay. The yes, we are going to use here the yes. अब the rule कैसे use करना है, कहाँ पे use करना है. So यहाँ पर मैंने definition दिया नहीं हूँ उसका. The लगता कहाँ है? I'm writing the definition over here. Please pay attention. खड़खड़ पीछे जो आप लोग कर रहे हैं कुछ लोग ध्यान दीजिए please यहाँ पर. Okay. Now when do we use the? We use the when something is particular. When something is specific. When something is special. When something is unique. When something is important. And when something is known. Getting it? Generally, we use the when something is particular, when something is known, when something is unique, when something is special, when something is important, etc. We use the for this one. ये आपको कोई बताएगा नहीं. Generally लोगों को पता भी नहीं है. The use करते कहाँ है?
When something is particular, जब कोई चीज खास रहेगी ना, particular रहेगी, specific रहेगी, उसके लिए अपन यूज करेंगे the. When something is special, बहुत ज्यादा special है, कुछ special चीज है जिसके बारे में बताना है, we can use that the. Unique है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, we are going to use that the before it. When something is important, खास एकदम, महत्वाचा एकदम, we are going to use that the. When something is known, something is very popular, बहुत ज्यादा popular है, known है, for that also we are going to use there the. और ऐसे बहुत सारे rules हैं, so we are going to see there the yes. अब ये the yes का मतलब क्या है? The yes मतलब यानी कब यहाँ पे the लगाना है. आगे जाएंगे तो हम लोग के पास में और भी रूल है the no, मतलब कहाँ पे the नहीं लगाना है. Okay, so we are going to see when to use the, when not to use the. Point number 1, we use the when something is particular, something is unique, something is special, something is known, something is popular, something is Popular, specific, important. important. All right, तो हम लोग ये सब चीजों के लिए the लगाते हैं. Any doubts? सर द की वजह से पूरा पेपर भी लिख सकते हैं. अरे the की वजह से कैसे? अभी अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो. What I used to do in my MA, अब मैं MA कर रहा था, मैंने engineering किया. Engineering जरा थोड़ा टफ था हमारा, रहता ही है. Coding, bidding, programming and all, much more things are there. But when I went to MA, I found there they used to have poems, they used to have novels. हर एक नंबर की वो poem जो थी ना, bundle. Sorry to say this. Why? Because वो poem के अंदर रहता क्या था? एक एड़े के ऐसा poet रहता था, और वो poet क्या करता है मालूम है? ऐसे एड़े के ऐसे कुछ भी बात करता है वो लेडी के बारे में. Oh lady, I love you so much that I can die for you. Please keep me as a servant. Please keep me as a janitor. I don't want love from your side, but I'll keep on loving you. Oh my God, मैं बोला बाप रे क्या पागल है. अब मेरे को वहां पे आया भाई, जब कभी मैं पेपर लिखता था मेरे को आया प्रदीप का याद. बोला प्रदीप भाई, बोले आशिक भाई. तो मैंने उसके अंदर ऐसा लिखा, हा ऐसे हाई लेवल की लैंग्वेज. बोला कभी यूनिवर्सिटी वाले ने अगर मेरा कभी पेपर में अगर चेक करके अगर मार्क्स नहीं दिया मेरे को, तो मैं उसको घर पे पहुंचूंगा फिर. एंड बिलीव मी, व्हाट आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू just read the poem once. I used to read the poem once, and I used to write in my own way. This is what exactly I'm just telling you. How many of you are I'm just taking your 2 minutes, but I'll be showing you something great today. How many of you are feeling nervous while going for an exam? कितने लोगों को nervous feel होता है while going for an exam? Yes sir. Exam No, में तो sir. कुछ भी. No, sir, never. Very nice, Osama. Can you please share me your experience? You never feel nervous. Why? But what do you think while going for an exam? Because sir, I am confident कि मैं मतलब कुछ भी मतलब लिख सकता हूँ. Okay, कुछ भी लिख मतलब सकते हैं. I can solve any question. मतलब मुझे उस चीज का नॉलेज रहा तो, क्योंकि मैं पहले ही मतलब उसका प्रिपरेशन करता हूँ. मतलब एक बार एक टॉपिक कोई भी है, सपोज कोई भी एक टॉपिक उसको मतलब अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं उसके बारे में मतलब पूरी बुक लिख सकता हूँ ऐसा. मतलब Wow, superb. मतलब मैं खाली नहीं बैठूंगा, मतलब 3 घंटे लिखता रहूंगा. मतलब कुछ ना कुछ तो ठोक डालूंगा बोले में. हाँ. कभी मतलब ऐसा ये नहीं हुआ सर, परसेंटेज कम आए बट कॉपी नहीं किया कभी लाइफ में. नहीं, चीटिंग हराम भी है ना, नहीं करना चाहिए. Good. Now, I'll tell you one more thing. सर इसलिए तो बोला कि द की वजह से पूरा पेपर लिख सकते हैं. अरे आप द की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के एक ए के ऊपर ना मैं पूरा पेपर लिख सकता हूँ. ये कहाँ पे कैसे यूज करना है. अभी आप लोगों ने ए का रूल पूरा, आपको मैंने एक शीट के अंदर ए का रूल पढ़ाया, बट ए का रूल भी उसके अंदर भी इंग्लिश बहुत डीप है, यूज नहीं होती. बात एक अलग है, यूज नहीं होती है वो, बट आपको पता होना चाहिए. मैं बताऊंगा कभी. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अब मैं अपने पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अपने इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम. वी हैव इन द मार्केट multiple varieties. Some of the students, they are reading from sharp notes. Sharp के notes से पढ़ते रहेंगे. Some of them reading from Navneet notes.
some of them reading from Vision notes, some of them reading from Pragati notes, some of them reading from TechMax note, some of them reading from बाल भारती. Bal Bharti, Bail Bharti. Textbook. Very good. बता रहा हूँ बाल भारती. Target. Okay, target. Some of the using target notes. Okay. और कौन सा है भाई? और कौन सा होता है? Some of the Textbooks. निराली वाला. Preparation. Yes. Or some of them making their own notes. Okay, etc. कुछ रहेगा ट्यूशंस का नोट्स यूज करते रहेंगे, कुछ रहता रहेगा गर्लफ्रेंड के नोट्स यूज करते रहेंगे. बाय द वे ध्यान दीजिए प्लीज. टेकमैक्स गया सर, अब टेक्नोलॉजी आए. ओके माय डियर. शिवदास नोट्स. नहीं, उनका स्प्लिट हो गया सर. ओके उर्ली कंचन नोट्स. बस खुश, पे टेंशन. I'll tell you one more thing. मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, इतना मोटिवेट होंगे आप लोग, इतना मोटिवेट होंगे, कभी जिंदगी में आप लोग डरेंगे नहीं एग्जाम देने के लिए. नाउ इतना सारा मार्केट में एक ही सब्जेक्ट का इतना सारा वैरायटीज के बुक्स होते कि नहीं है? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. Tell me yes or no, all of you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now please tell me, examiner is there, right? उसने कौन से बुक से पढ़ के गया रहेगा? जीनो पता है आपको? Textbook, sir. बोला था उसने आपको? नहीं सर, पढ़ाते उसमें से ना सर. पढ़ाते, बट उसने नोट्स जो बनाया रहेगा वो कहाँ से लिया रहेगा? उसने आंसर कहाँ से लिया रहेगा उसने? सर यूनिवर्सिटी से. तो यूनिवर्सिटी का नोट्स भी आता रहेगा क्या? उसका वन सर. मुझे एक बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू नो द एग्जामिनर हैज स्टडीड फ्रॉम दिस बुक, दिस पब्लिशर्स? नो वन नोज. एक ही बात है, सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कौन से बुक से पढ़ा है क्या आपको पता है क्या? नहीं है. अरे तो आप लोग डरते क्यों हैं? अगर आपने इससे पढ़ा रहेगा, हो सकता है एग्जामिनर ने इसका आंसर पढ़ के आया रहेगा, हो सकता है एग्जामिनर इसका आंसर पढ़ के आया रहेगा, हो सकता है एग्जामिनर टारगेट का पढ़ के आया रहेगा, हो सकता है एग्जामिनर प्रगति का पढ़कर आया रहेगा. आपको मालूम थोड़ी है कौन सा एग्जामिनर पढ़कर आया, कौन सा वाला. आप अगर शार्प का अगर आंसर आप लोग लिखेंगे वहां पर तो गलत देगा आपको वो, उसका No, बाप sir. भी गलत देगा. अगर आप लोग ने टेक मैक्स से लिखा वहां पर तो वो गलत देगा? नहीं देगा, उसका बाप भी गलत नहीं दे सकता है. इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, जो कि आप लोग को खुद को समझा है, आप वो नोट्स बनाया, आपने उसमें से स्टडी किया, आपने जाकर अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, क्या आपको गलत दे सकता है? No, sir. नो. No, sir. अरे वो गलत दे ही नहीं सकता है. सो व्हाई आर यू फियरिंग? अरे 4 दिवसात रट्टा मारत होतो. इरिटेशन आणलेत ना कार्तिक, शिवदास कुठे ठेवलेत ते? अरे पॅन्ट, अरे तिथे नको ठेवू, टाय मध्ये ठेव. यहाँ पर आपको मालूम है क्या एग्जामिनर ने कौन से वाले नोट्स पढ़ कर आया है? यू डोंट नो. You don't know, so why are you fearing? Why the hell are you fearing there? आप डरी क्यों रहे भाई? सोचने वाली बात है. अरे whatever you are going to answer there, whatever going to you write, you will get the marks. Same case Mr. Osama has given a very good trick that you are going to explain in your own words. आप लोगों ने अगर आपके टेक्स्ट बुक में से भी अगर थोड़ा पढ़कर गए और आपको कंसेप्ट मालूम पड़ा और आप लोग वहां पर लिख रहे हैं, you will get marks. ये मैं थ्योरी पेपर के लिए बता रहा हूँ, प्रॅक्टिकल पेपर के लिए नहीं तो आप लोग बोले कोडिंग कशी करणार सर तुम्ही सांगा त्या म्हाताऱ्याला. कोडिंग वैसे नहीं होती. कोडिंग के लिए लगता है दिमाग, कोडिंग के लिए लगता है दिमाग, और दिमाग का हो रहा था पूरे द यूजर. गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली. उसको आपको मालूम है कौन से बुक से पढ़कर आया हो, हमको मालूम नहीं है. हो सकता है वो नवनीत का पढ़कर आया रहेगा, हो सकता है बाल भारती का, हो सकता है टारगेट का, हो सकता है निराली का, हो सकता है विजन का, पता नहीं किसका पढ़कर आया है क्या नहीं. तो डरने का नहीं, बिंदास जाके लिखने का एग्जाम्पल. ओके चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं, हमारा बिना टाइम पास किया, अदरवाइज कार्तिक नाराज हो जाएगा हमारा. चलो the, yes, so we use the when something is particular, something is unique, something is known, something is popular, something is important, something is specific, and something is unique. All right, good. Now rule number 1 is saying the is used when something is introduced earlier and referred again. We use the when something is introduced earlier and referred again. We use there the. कितने लोगों को डेफिनेशन समझ में आएगी?
Who can tell me? Please tell me. Definition समझ में आया जिसको? समझ गया बोले मेरे को द का पहला रूल. कितने लोगों को द का पहला रूल समझ गया? हेलो. नहीं समझ में आया? Oh really? Can you please explain me? सर सर मतलब द का अपन नहीं सर पर्टिकुलर में यूज कर सकते हैं, कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं मतलब सर. आपलाच आहे कुठं पण यूज करा. हो घेतली का काय? मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर आए हैं, स्पोकन इंग्लिश की सीडी घ्या. सीडी घ्या, घरी बसून तुम्ही इंग्लिश शिका, घरी बसून इंग्लिश शिका. टीचर ऐसा डेफिनेशन रहेगा तो आप किसको आगे सीडी को निकाल के पूछेंगे हेलो इसका डेफिनेशन क्या है? Teacher is needed. Now I'm going to explain you. The is used when something is introduced earlier and referred again. अब यहाँ पर रूल बोल रहा है जब आप कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं पहले और वो चीज के बारे में वापस से आप बात कर रहे हैं, आप लोग वहां पर द लगा सकते हैं. सो वो चीज आपके लिए पर्टिकुलर बन जाएगा, स्पेसिफिक बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मुझे इसके बारे में बोलना है, स्पीकर के बारे में, तो मैंने स्पीकर के बारे में पहले इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर मैं वो स्पीकर के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए वो पर्टिकुलर हो जाएगा. ये से नो? यस Yes, sir. आप लोग को मालूम है कि मैं कौन से स्पीकर के बारे में बात कर रहा हूँ? Yes, ये वाले sir. स्पीकर. यस सर नो? तो वो Yes. पर्टिकुलर हो जाएगा. व्हेन समथिंग इज पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू यूज इट. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब एक बच्चा है, स्टोरी के हिसाब से बताऊंगा आपको तो समझ में आपको जल्दी आएगा. एक बच्चा है जो पार्टी में गया, और वो बच्चा कौन है? कार्तिक. गया किसकी पार्टी में? प्रदीप की पार्टी में. अब प्रदीप का बर्थडे था, प्रदीप के बर्थडे पार्टी में गया वो बेचारा बच्चा, छोटा बच्चा कार्तिक गया प्रदीप के बर्थडे पार्टी में. मस्त खाना वाना खा के आया रात को एकदम. तो मम्मी उसको पूछ रही कार्तिक को, बाळा काय खाल्लं तिथं? प्रदीप ने कुछ खिलाया कि नहीं, कि खाली पैसे चुरा के? पाव भाजी. पाव भाजी नहीं खाया उधर. तो वहां पे कार्तिक देखो मम्मी को क्या बोल रहा है. They served a piece of cake and some sandwiches. उन लोगों ने क्या किया था, केक का एक टुकड़ा दिया था एंड कुछ सैंडविचेस वगैरह दिए थे. खाना पीना कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, केक का एक पीस दिया था और कुछ सैंडविचेस दिए थे. पर आई तुला माहिती काय झालं तिथं? The sandwiches were good, but the cake wasn't. The sandwiches were good, but the cake wasn't. अभी कौन से केक और कौन से सैंडविच की बात कर रहा है वो? वही पार्टी वाले सर. करेक्ट, एग्जैक्टली वो पार्टी वाले. और उसने पहले उसको इंट्रोड्यूस किया. देखो यहाँ पर किया कि नहीं उसने इंट्रोड्यूस? They served a piece of cake and some Yes. sandwich. अब वो केक और वो सैंडविच के बारे में वापस बात कर रहा है वो, तो वहां पर क्या लगाएगा उधर वो? The sandwiches were good. वो वाले सैंडविच अच्छे थे, बट द केक wasn't. और वो केक अच्छा नहीं था. So when you are introducing something and you are referring that thing again, we can use there the. हम लोग वहां पे the use कर सकते हैं. For example, this is speaker. मैंने introduce कराया क्या नहीं? Yes, sir. This is a speaker. The speaker is gray. The speaker has a hanger. The speaker is JBL. The speaker has two sound. देखो the. Same case. This is my phone. This is my phone. The phone is Apple. The phone is white. The phone has two cameras. The phone is from California. The phone has 6.1 inches screen. The phone मतलब नहीं ये phone, ये phone, ये phone, ये phone, ये phone. The phone. समझा? Yes. Same case, same case, same case, same case. Yeah. These are headphones. मैंने introduce किया क्या नहीं? Yes. These are headphones. The headphones are JBL. The headphones are black. The headphones are very comfortable. The. So when something is introduced earlier and referred again, we're going to use that the. कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? Please tell me. Me, sir, समझ में आया. सर समझ बट में वहाँ आया, पे सर. हेडफोन्स और JBL कैसे आएगा सर? ये headphones JBL के हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं. The headphones are JBL. बोल सकते सर ऐसा द हेडफोन्स? हाँ. The head actually उसका नाम मैं पूरा सेंटेंस है वहाँ पर. The headphones name is JBL. तो मैं इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूँगा शॉर्टकट में. अपन बोलते ना
गने 2 चाय दे, अपन बोलेंगे गने 2 कप में चाय दे, ऑब्वियसली हमको मालूम है भगोने में थोड़ी भर के देने वाला हूँ, कप में देने वाला, तो अपन कप बोलते क्या उधर, No, sir. Okay. अपन क्या बोलते गने 2 चाय दे, सिंपल. ओके, यस. Yes. कंटिन्यू प्लीज, कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स वन बाय वन. इंट्रोड्यूस करना है, द लगाना है, इंट्रोड्यूस करना है, द लगाना है. चलो, This is my car. फिर क्या हुआ? Uh, The car is black, the car is red, the car is Ferrari. अरे फेंको जल्दी जल्दी. really The, sorry, the, sir. the. Network Sir, problem. Sir, this is my table. This is my Yes. table. The table is of wooden. The table's color is black. Very good, very good. चलो next. This is my colleague. Osama. Yeah. This is my colleague. She is working hard. और अब मेरे को शी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? Oh, द चाहिए. तो yes, बारे में मत बोलो, please. I don't want to listen about your girlfriends. This is my TV. हाँ. The TV is LED screen. Okay. The TV is company Philips. The TV is Philips. Very good, very good. मेरे को बीवी लगा पहले. चलो कंटिन्यू. सानिया मैडम, शिवदास भाई, कार्तिक भाई, गुड्डू भाई, मेक सेंटेंसेस. अदरवाइज मैं आप लोगों को कुछ तो एक देसी नाम देता लूंगा फिर. चैताली मैडम. This is Sunrise Building. This is my stand. The pen stand is blue. Blue. This Yes, is continue. building. The building is blue color. The building has 4 floors. Very good. Vidas. This is my shirt. Yeah. The shirt is gray. The shirt has the lining pattern. Good, very good. Karthik. The shirt is the shirt has mandarin collar. Very good. Karthik. Pradeep. This is my car. Yeah. This is have black color. It The car have is 4 black. gears. The car is black. The car have 4 gears. The car Has. has. 4 gears. Yes. चलो गुड्डू. गुड्डू. प्रदीप. Yes, sir. This is my laptop. The laptop has 1 TB storage. Next. Karthik. This is my bike. The bike from Honda company. She Good. have 2 tires. She The she bike- have सीना the है, bike अगर सीना have है, मारल पकड़ो धरण मार Sorry. आपल्याला. the bike have 125cc As. engine. As Okay. So this is what the rule. Are you getting the rule? For example, this is a curtain. The curtain is green. The curtain is from India. The curtain is 2 feet long. Correct? Now this is a laptop. The laptop is silver. The laptop has many keys. The laptop has 2 years warranty, etc. आप लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं. Any doubts to anyone? No, sir. No, sir. Any questions to anyone? No, So this is what we have started No, with. sir. Those. So please don't be absent. And tomorrow we are going to start a new tense. So please don't be absent tomorrow. Please don't be absent tomorrow. And tomorrow I'm going to show you how to speak up in English with your friends. आप लोगों को English बोलना है कि नहीं अपने दोस्तों के साथ में? Yes. Yes, sir. Friends के साथ में दोस्तों sir. तो मैं कल आपको बताने वाला हूँ. Yes, absent sir. करेंगे. Sir, One more good news is for you that the students who are not going to pay the fee till 30th of October, they won't be allowed in the class. Okay? So please. sir, recordings sir बनाए आपने? हाँ रिकॉर्डिंग बनी हुई एक्चुअली 2-3 दिन से प्रॉब्लम ये आ रहा है